Good morning, all of you. So let us continue with the tribal revolts. In last video, I said you all that there were many tribal revolts that took place. Tribal people were not happy; they were not content with the British interference in their property, so they revolted. So we read about the Santhal of Bihar, Bengal, and Jharkhand, Kols of Bengal, Mundas of Jharkhand, Bhils of central India, and Khasis of northeastern India. So today we'll be reading in detail about these revolts. Now let us see. The year from 1763 to 1857 saw rebellions amongst every year against the British by different sections of society among the disposed landlords, disbanded soldiers, tribals, and impoverished peasants and artisans. Large tracts of tribal lands were taken over by British planters for their plantations. So from 1763 to 1857 बहुत सारे रिवोल्ट इंडिया में हुई. ठीक है, कुछ पीजेंट्स ने की, कुछ आर्टिजन्स ने की, आर्टिस्ट ने की, कुछ सोल्जर्स ने की. लाइक 1857 में आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, मंगल पांडे रिवोल्ट. सो एंड कुछ रिवोल्ट ट्राइबल पीपल ने की. वाई? बिकॉज ब्रिटिश टुक ओवर देयर लैंड जो कि उनकी अपनी इनहैबिटेंट प्लेस थी, जहां वो रहते थे, उनकी घर थी. ब्रिटिशर्स ने एक तरह से उनसे उनकी घरों को उनसे वापस ले लिया. ओके. The tribals lived in these regions were displaced and became landless. So tribal people को क्या करते थे, वो displace कर देते थे, उनकी जमीन लेके उन्हें उनके प्रॉपर्टी से हटा देते थे and they became landless. उनके अपने पास कोई land नहीं थी, because they used to live in forest, and when British came to India they saw forest as a place from where they could टेक मैनी रिसोर्सेज. जैसे फॉरेस्ट में फ्रूट्स के प्लांट्स थे, स्पाइसेस के प्लांट थे, एक्सपेंसिव वुड थी जैसे सैंडलवुड, चंदन जिसे आप कहते हैं. सो दीज ऑल थिंग वॉज इन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल यूज टू रिसाइड इन द फॉरेस्ट. सो वॉट ब्रिटिश फर्स्ट दे डिड वॉज दे टुक फॉरेस्ट एंड टर्म्ड इट एज द स्टेट प्रॉपर्टी. दैट अब जो फॉरेस्ट है वो स्टेट प्रॉपर्टी होगी. दैट मीन्स अब फॉरेस्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को बिलोंग करती है. सो ऑल ऑफ अ सडन दीज ट्राइबल पीपल दे लॉस्ट देयर नेटिव place of resident and as well as their livelihood. अब ना तो उनके पास रहने को जगह था, ना उनके पास कुछ खाने को था. So they were forced to work on British plantation. और जितनी भी लैंड ब्रिटिशर्स ने उनसे ली थी उस पे वो क्लियर करके वहां प्लांटेशन करते थे. और पहले जो लैंड ट्राइबल पीपल को बिलोंग करती थी, अब वो खुद अपने ही लैंड पे एज अ लेबरर वर्क कर रहे थे. सो ऑल दीज एंगर बस्टेड आउट एंड दे रिवोल्टेड. A large labor force was required on the plantation. These tribals were forced to work on plantation for meager wages as bounded laborers. So they were forced to work like a bounded laborers. Commonly उन्हें बेगार्स भी कहा जाता था. Bounded laborers were such people जहाँ पे उन्हें बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी and there was no terms of work. एक काम का टर्म्स होता है दैट आपको आना इतने बजे है, आप इतने बजे जाएंगे, आपको इतनी हॉलीडेज मिलेंगी. सच थिंग डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. दे यूज्ड टू वर्क ऑन द मर्सी ऑफ द ब्रिटिशर्स. जो भी प्लांटेशन ओनर्स थे उनकी मर्सी पे वो वर्क करते थे. नाउ taxation on tribal products, influx of Christian missionaries, and takeover of the forest on which their livelihood depended led to tribal uprising. They fought with their bows and arrow and were easily crushed. Their anger was directed against all the symbols of British power. So now what happened? Now there were various incidences that took place. एक तो taxation हो गई थी ट्राइबल प्रोडक्ट्स पे. अगर कोई भी ट्राइबल आदमी फॉरेस्ट से कुछ सामान लेके उसे बेचने की कोशिश करता है, उसे टैक्स पे करना पड़ता था. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो कन्वर्जन कराने लगे थे. कन्वर्जन मीन्स दे यूज्ड टू फोर्स ट्राइबल पीपल टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू क्रिश्चियनिटी. इसी वजह से आप देखेंगे कि चर्चेस में मैक्सिमम आदिवासी जो आप मिलते हैं वो क्रिश्चियन
क्रिश्चियंस होते हैं, मैक्सिमम आदिवासी, बिकॉज एट दैट टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सारे ट्राइबल पीपल को कन्वर्ट कराने लगे. ये ट्राइबल पीपल जो थे वो आइसोलेटेड रहते थे सोसाइटी से, उन्हें कुछ नहीं पता था कि हमारी सोसाइटी में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई टाइप का कोई एग्जिस्टेंस भी है. सो व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर फॉरेस्ट, Christian missionaries took it as an opportunity to convert them. Apart from that, जो ब्रिटिशर्स थे वो भी क्रिश्चियंस थे. सो दे फेल्ट कि अगर क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इन ट्राइबल पीपल को कन्विंस हम कर सकते हैं. नाउ संथल्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड झारखंड 1855 to 1856. ओके, संथल्स का एक रिबेलियन हुआ था 1 साल का. विल रीड अबाउट दिस. The Santals inhabited some parts of Chota Nagpur Plateau, Bengal and Bihar. कुछ छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे झारखंड की कुछ पार्ट्स में है, मेनली वो बिहार और बंगाल में है. They mainly led a life of hunter gatherers. However, as British captured their land and they retreated into the interiors of the forest, further away from the towns and cities. When the British, with the help and support of local landlords, sought to usurp even these lands, the Santals revolted. Their revolt was directed against all the outsiders, including the British officials, police, zamindars, and moneylenders. The terms used for non-native people was Jiku, means outsiders. So what happened now? Santhal rebellion जो हुई थी, पहले संथल्स की लैंड ब्रिटिशर्स ने कैप्चर की. द बिगिनिंग या ऐसा फॉरेस्ट पार्ट जो कि शहरों से बहुत पास था. देन व्हाट संथल्स दे डिड वाज दे वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट के अंदर वो चले गए पीसफुली. उन्होंने कुछ रिवोल्ट नहीं किया. अपनी आउटर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स को देखे वो और डीप चले गए, अंदर चले गए. संथल जो ट्राइब है दे आर बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स. वो एनिमल्स को हंट करके और फूड गैदर करके, फ्रूट्स गैदर करके, दैट मीन्स देयर लाइवलीहुड मेनली डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट. सो दे वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के अंदर चले गए. स्टिल ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड वाज, फिर लोकल लैंडलॉर्ड्स धीरे धीरे ब्रिटिशर्स कैप्चर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स. वो वहां तक भी पहुंच गए जहां संथल्स थे. सो देन संथल्स दे रिवोल्टेड एंड दे रिवोल्टेड नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ये जो ट्राइब थी ये ऑलरेडी फॉरेस्ट में रह रही थी. दे हैड नो नॉलेज दैट ब्रिटिशर्स जो है वो बाहर से आए हैं, जमींदार हमारे कंट्री के हैं, पुलिस हमारे कंट्री के. दे हैड नो नॉलेज अबाउट इट. So what they started doing is they started revolting against all the outsiders and they gave them a term called as Diku. Diku मतलब outsider. Non-Santhals जो थे उन्हें वो Dikus कहने लगे. And they revolted and they started attacking not only British officials but police, zamindars, moneylenders, वो सबको अटैक करने लगे. Kanu, Bairo, Sidhu and other Santhal leaders got support from large number of potters, weavers, blacksmiths, etc. All symbols of colonial rule such as police stations, railway lines, post offices and houses of tyrannic officials were attacked. Okay. सो सिद्धू, कानू, बायरो ये सब जो थे वो प्रोमिनेंट संथल लीडर्स थे. और संथल रिबेलियन को और भी लोगों ने सपोर्ट किया था. किसने सपोर्ट किया था? पॉटर्स ने, वीवर्स ने, ब्लैकस्मिथ्स ने, इन्होंने भी सपोर्ट किया था. व्हाई? बिकॉज दे फेल्ट दैट इवन देयर लाइवलीहुड वाज इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश. एंड हाउ दे डेमोन्स्ट्रेटेड, हाउ संथल्स डेमोन्स्ट्रेटेड देयर हेट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स. वो अटैक करने लगे सारे ब्रिटिश या ऐसी चीजों को जो कि कॉलोनियल पार दिखाता था. ओके, लाइक पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्रोमिनेंट जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उनके घरों को, ये सारे चीज दैट मीन्स दे बिलीव्ड इन डिस्ट्रक्शन. वो डिस्ट्रॉय करने लगे ब्रिटिश प्रॉपर्टी को. द संथल्स मेनली यूज द टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर. संथल्स जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर का मेथड यूज करते थे. ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? गुरिल्ला, आप गुरिल्लास जानते हो ना, ब्रीड ऑफ मंकीज. ठीक है, एप्स होते हैं.
what they these Santals used to do, ये पेड़ों में छुप के बैठे रहते थे. Since Britishers were unaware about the roads of the forest, Santals were the natives, they knew about the forest. वो छुप के पेड़ों पे बैठे रहते थे and all of a sudden वो उन पे अटैक करते थे. पेड़ों पे छुपे रहते थे, फॉरेस्ट में छुपे रहते थे. अभी यही सेम मेथड यूज किया जाता है. हमारी इंडियन आर्मी जब फॉरेस्ट में अटैक करती है, इफ यू वुड हैव सीन, दे वेयर अ कैमोफ्लैज ड्रेस, they paint their faces, they have their hats have bushes on it, जो appear अगर वो लेट जाए किस फॉरेस्ट एरिया में, they'll appear, they'll camouflage with the surroundings. So they use the same method, अपने सराउंडिंग्स में छुपे रहते थे. और जैसे ही ब्रिटिशर्स या कोई भी आउटसाइडर्स डीकू एंटर करते थे, they used to all of a sudden attack them. Even if you have the most advanced weapon, you need time to take position and attack. All of a sudden, if you have been attacked, you lose your position. Okay. Finally, the British authorities launched a military campaign against Santals and crushed them in 1856. Their leaders were arrested and the movement came to an end. However, the legends of their heroic efforts continue to be a source of inspiration for many. So British knew one thing, कि ये जो revolt है संथल्स का, वो आराम से कर्ब किया जा सकता है, because संथल्स जो थे उनके पास कोई बहुत एडवांस वेपन्स नहीं थे. They fought with bows and arrows. ठीक है, तो उनको क्रश करना बहुत आसान था. सो दे वर इजिली क्रश्ड एंड देयर प्रोमिनेंट लीडर्स सिद्धू, कानू, ये सब जो थे उन्हें ब्रिटिशर्स ने इम्प्रिजन कर लिया, क्योंकि उनके पास अब कोई लीडर्स नहीं थे. देयर रिवोल्ट केम टू एन end. But still the heroic incidents, the heroic efforts that was made by this leader still it continues to be the source of inspiration. It was a source of inspiration for many tribal people, that if Santals could do, even we could do that. Now let us see. Revolts in Chota Nagpur region and the northeast. Many tribes inhabited the Chota Nagpur region around the borders of Bengal, Bihar and Orissa. This region witnessed many tribal movements. Similarly, northeast was another important hotspot of tribal uprising. Let us have a brief look at some of the revolts that took place in these regions during British period. So, Chota Nagpur is such a region that is, it's a border area for Bengal, Bihar and Odisha. So, here it was very, very important to curb for Britishers, it was very important to curb the tribal movement, because लोग क्या करते थे ना, that Bengal में अभी हैं, फिर वो border cross कर जाते, दूसरे state में पहुंच जाते. So, collection of revenue was very difficult in such case. So what happened? There were many revolts that took place at that time. Okay. So there were many revolts that took place, and among them was your Munda rebellion, then was your Kol rebellion, Khasi rebellion, and in northeast also Manipur and Assam में बहुत सारी छोटी-छोटी revolts हुई थी. So this will be doing your Munda rebellion in the next video. Munda rebellion, I think you all know one of the most prominent figure of Munda rebellion is your Birsa Munda, who is treated as God in your Jharkhand by the tribal people. They call him as Bhagwan Birsa Munda in your Jharkhand. He's revered a lot because of his tremendous efforts that he made for his tribal people to fight against the Britishers. So this all we'll be doing in the next video. What you need to do now is that you need to find at least 15 questions, middle questions from the part that I have done till now. I have done till your Santhal rebellion. Till Santhal rebellion, you will be finding the 15 extra questions and you will be doing in your copies. Okay, so that is very important because, now periodically we'll be asking for your copies. So it's very important for you to do all these things in your copies. Apart from that, in the back question answers also, the questions that you can do on your own. Please do it so that you have relaxation after I complete the chapter. So there are a few questions that you will be doing, like short answer. Question number 1, name the various source materials used for studying tribal history. What was the outcome of Santhal rebellion? Khasi we have not done. Now you will be doing, mention 2 changes that came about in tribal society during the British rule. You will do this. So from short answers, you will be doing A, B and D. In long, you will be doing, discuss the region that led to various tribal movements throughout the country, A. Then you will be doing
How did the rule of East India Company affected the tribal people? East India Company or British rule, that you will be doing. Okay, so and then you will be doing how did plantation farming affected the tribal economy. So these are some of the questions that you will be doing in your copy. Thank you.